हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय के नितिन आर्ट चैनल। के नितिन आर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। इन प्रीवियस वीडियोस टॉपिक लाइक पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप वर शोन। इन दिस वीडियो स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग ऑफ अ हुप्ड एनिमल हॉर्स हैज़ बीन डन। इस वीडियो के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो वॉचिंग द फुल वीडियो इज नेसेसरी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. After this, you will get to see the second part also. Please like, share, comment and subscribe to my channel. और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में यह आपको सूचित करेगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्केचिंग और पेंसिल ड्राइंग में सब कुछ ज्योमेट्रिकल शेप के आधार पर होता है. सर्कल, ट्रायंगल, सेमी सर्कल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. उदाहरण के लिए घोड़े के सिर को ट्रायंगुलर ब्लॉक में फिट किया जा सकता है. This triangular block can be useful to further understand the composition. For simplicity, the skull division here can be done in three parts too. The muzzle, long parts of the nose, skull base. Your observation is very important for drawing. Minute observation, study of shade and light, shape and size, negative space or positive space. If you pay attention to these things, then you can easily improve your drawing and shading. पेंसिल स्केचिंग करते समय आपको प्रत्येक रंग के ब्लैक एंड व्हाइट टोनल वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए. If the pressure on the pencil is increased or decreased, it gives dark and light shades respectively. Only use a softer pencil at the beginning of sketching, such as 2B, 4B, 6B and so on. These pencils are soft. Variation in pressure leads to lightness and darkness of line accordingly. Sketching a lot gradually improves your painting potential. पेंसिल स्केच करते समय डेवलपमेंट ऑफ शेप्स और प्रमाणबद्धता पर सावधानीपूर्वक ध्यान देना चाहिए.
Choosing the right sketching tools is the next level. For constant improvisation, daily sketching is of utmost importance. Dedicating your time towards drawing and sketching will ultimately lend you an upper hand in materializing elements of nature on the paper. Cross-hatching lines highlighting areas correctly, darkening of regions with no fall-off light are integral techniques of tint-tone shade combination. ऑब्जेक्ट के सरफेस पर टेक्सचर के उपयोग से ऑब्जेक्ट में 3 डायमेंशनल प्रभाव व्यक्त किया जा सकता है। Don't forget these tips and you won't call yourself a beginner ever again. नियमित ऑब्जर्वेशन के साथ यदि आप ड्राइंग का अभ्यास करना जारी रखते हैं तो आपके काम में चरण दर चरण सुधार आता है। Art is not confined to some set of rules, but is more about qualitative imagination of an artist's idea. अधिकांश समय हम केवल हमारे सामने जो ऑब्जेक्ट है उसका ही निरीक्षण करते हैं, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के आसपास की नेगेटिव स्पेस को भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। Taking into consideration the proportion of composition on paper and the rest of the paper presents the overall composition of the picture nicely. डिटेल्स के लिए डीप ऑब्जर्वेशन रखना एक वैल्यूएबल स्किल है और यह क्षमता आपके ड्राइंग सब्जेक्ट के होराइजन को व्यापक रूप से बढ़ाती है। एक बार जब आपको ड्राइंग की मूल बातें अवगत हो जाती है तो रियलिस्टिक स्केच आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा।
It is well to divide the body in three parts: forequarters, belly, rear quarters. यह एक प्राकृतिक विभाजन होने की वजह से प्रॉपर प्रोपोर्शन प्राप्त किया जा सकता है। While drawing an animal, understanding the key aspects of skeletal structure, anatomical build-up, position and stability in lines provides the sketch with a natural touch. This will help eradicate the slight imperfection regarding awkward shapes and forms. This same advice should work for other topics like landscape and portrait. Portraits, landscapes, still life, nature, and so on. The topics are infinite. Patience while handling the pencil and a better hand-eye coordination are the ABC of sketching. इरेजर के उपयोग को कम करने से आपका हाथ स्केचिंग में अधिक निपुण हो जाता है। इससे आपको अपनी गलतियों को समझने में मदद मिलती है और उन्हें रेक्टिफाई करने में भी मदद मिलती है। Giving first preference to understanding flow of lines, basic structure, and the use of shading techniques can be very helpful for the sketching process. Once you get the hang of the basic drawing, realistic sketches would not remain difficult for you anymore.